This meeting is being recorded. So in the previous class, we talked about uncertainties, and आज class में we need to solve more past papers related to uncertainties. And let's move to our class. So this was the last question we had in the previous class. There are some questions which we did. जैसे आपके सामने, ठीक है? Now I think we need to move towards yearly past papers for paper 2. We are starting from 2018 and we will go through the past papers and we'll see अगर कोई past paper हमारे सामने से गुजरता है that is related to the topic known as uncertainty. Yes, we have one from May-June 2018 P23. Anyone said something? So May-June 2018 P23. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh, sir. Walaikum assalam wa rahmatullahi wa barakatuh. An analog voltmeter is used to take measurements of a constant potential difference across resistors. For these measurements, describe one example of systematic error. तो one example आपको बतानी है किसकी systematic error की. तो if he is Zero asking error, you sir. about one example of systematic error, तो हमें सिर्फ example बताना है. Example के तौर पे हम बात कर सकते हैं. The error which is roughly constant is what you call zero error. ठीक है बेटा? So zero error. And what about the random error? Parallax error. Yes. Parallax error. So one example he said, one example we gave. The potential difference across the resistor is measured as 5 volt, which is the actual value, and plus minus 0.1 volt is basically the uncertainty in the voltage. The resistor is labeled as 125 volts, 125 ohms is the actual value, and plus minus 3% is the percentage uncertainty in resistance. Okay? Calculate the power dissipation by the resistor. Does anyone know the formula for power dissipation? Anyone have an idea what power dissipation is? Mics are unmuted. जी? सर वो पोटेंशियल फॉर्मूला है या Any formula you remember. We have resistance, we have voltage. So एनर्जी बाय टाइम. energy by time. Yes, you can say the simplest formula for power dissipation, but we don't have energy right now. We don't have time. So in O levels, in practical IV. electricity, we talked about power dissipation can be found out as I square R and V square over R and IV as well. But हमारे पास यहाँ पे current नहीं है. So what do we have? Voltage and resistance. यानी go with this formula. ठीक है बेटा? So first of all, write down the formula of power dissipation equals to V square over R. He said to calculate power dissipation. अभी तक we did not talk about uncertainties. To keep the focus clear. Voltage is 5 and resistance is 125. 5 का square 25 upon 125. What do we get? 0.2. Calculator start. Yes, it will be around 0.2. So I am not wrong.
Okay. Just wait for a while. The moment you kick out yourself from the class, मैंने खुद को ही क्लास से बाहर निकाल दिया था, कोई बात नहीं। खैर, तो point 2. But as I told you, whenever you are asked to write down any answer, write down your answer up to 2 significant figures. So point 2, do not write point 2, write .20. Okay? So trailing zeros with decimals are significant. This is what we have already talked about. सही है? So you have found out the power dissipation. Now what is asking about? Calculate the power dissipation in uncertainty. Calculate the percentage uncertainty in calculated power. So beta, I'll use this formula. Uncertainty in power upon power multiplied by 100, because he asked about percentage uncertainty in power. तो पूरी इक्वेशन परसेंटेज अनसर्टेनिटी के मुताबिक बनेगी सर इक्वल्स टू यस बेटा कौन था is anyone asking a question? Oh, chat box is open, you can send your messages to the chat box. So plus minus uncertainty in voltage upon voltage multiply by 100, but since the power is square, so we will multiply it by 2 plus uncertainty in resistance upon resistance multiply by 100. This is how we have made the equation. Walaikum assalam, Efra. Okay. So let's put the values. We want percentage uncertainty in power. What do we have? 2 multiplied by uncertainty in voltage is this. Voltage is this. 0.1 divided by 5 multiplied by 100 plus this whole value is given as 3%. ठीक है? तो हम यहाँ पे क्या करेंगे? डायरेक्ट 3% पुट कर देंगे. And now uncertainty in power upon power multiplied by 100. What do we get here? 2 multiplied by 0.1 divided by 5 multiplied by 100. So it's 4. So plus minus 4% plus 3%. What do we get? Uncertainty in power upon power multiplied by 100 is plus minus 7%. As I told you, write down your answer up to 2 significant figures. So it will be 7.0. And do not write percent because percent is already being written down. ठीक है बेटा? ये हमारा सवाल कंप्लीट हो गया. Now determine the value of power with its absolute uncertainty. सर आपको कौन से चैट बॉक्स पे आपको करना है मैसेज? Chat box में you can send message to chat-question. Let me see if हाँ ये third one chat-questions. Oh, this one.
वालेकुम अस्सलाम शायान. Okay. Find element by, ये क्या है शायान? Okay. To appropriate number of significant figures. बेटा appropriate number of significant figures are 2. ठीक है? तो पावर की वैल्यू हम ऑलरेडी निकाल चुके हैं. दिस इज द वैल्यू ऑफ पावर बट विद एब्सोल्यूट अनसर्टेनिटी. व्हाट इज एब्सोल्यूट अनसर्टेनिटी? वी हैव जस्ट फाउंड आउट दिस. And what is absolute uncertainty? Only this. Let's find out absolute uncertainty in power. It will be equal to plus minus 7 multiplied by power divided by 100. So plus minus 7 power is 0.2 divided by 100. What happens? What do we get? 7 multiplied by 0.2 divided by 100. We get 0.014. Okay. So now we have power as 0.2 watt and we have uncertainty as 0.014 watt. देखिए दोनों के दो सिग्निफिकेंट फिगर पे. नॉन जीरो, ट्रेलिंग जीरो विद डेसिमल, लीडिंग जीरो, नॉन जीरो. तो दोनों के दो सिग्निफिकेंट फिगर है. दिस इज आवर फाइनल आंसर. अच्छा जी. Send me the notes of previous lesson. Bilal, go to YouTube, the Physics Unleashed, the Physics Unleashed. यहाँ पे आपको सारे previous lecture मिल जाएंगे. ठीक है? This is the first A-level class with you after a long time. Oh हो, क्या बात है. First of all, thank you for everything. Oh my God. Thank you as well. Okay. सर Yes, beta. सर ये हम जो अनसर्टेनिटी होती है उसको हम राउंड ऑफ करके नहीं लिखते. राउंड ऑफ करके मतलब हम राउंड ऑफ तब करते हैं व्हेन वी हैव आंसर अप टू 2 to 3 डेसिमल प्लेसेस. ठीक है? या मोर देन 3 सिग्निफिकेंट फिगर, 4 सिग्निफिकेंट फिगर. हमारा आंसर आया ही 2 सिग्निफिकेंट फिगर पे. दैट इज व्हाई आई रोट अप टू 2 सिग्निफिकेंट फिगर्स. ठीक है? ओके सर. आसिफा, व्हेन क्वेश्चन estimate the uncertainty, it's for mark 1 mark. Do I have to do the working or just guess? I was doing a practical past paper today in a school and came across. Estimate में आपको कैलकुलेशन शो नहीं करनी होगी. फॉर एग्जाम्पल, यू आर रीडिंग अ रूलर. what is the estimate uncertainty in that ruler? Plus minus 0.1 centimeter. Whenever you are reading the ruler, you can make parallel error and you read for safe side 0.2 centimeter. तो आप अगर आप 7 सेंटीमीटर पढ़ रही हैं तो just by parallax error you read 6.8 centimeter or 7.2 centimeter. So here you are making an error of plus minus 0.2 centimeters. So this is the estimated value. You don't require to show any working for this. Shayan, this is the first chapter. तो ये हमारा एक सवाल हो गया. Understood? कोई सवाल इस सवाल में? All clear, sir. Okay. Can you please add me in the group? I'm not added. Shayan asked Sir Salman, will be responsible for adding you into the group. Okay, let's move towards other question. I'm just erasing all the past papers which we'll be doing in future.
Okay. This question is from, let me see, October, November 2017 P22. And what is being said? One end of a wire connected to a fixed point. A load is attached to the other end of the wire, so the wire hangs vertically. Okay. मतलब, if I show it diagrammic point of view, how what the examiner is saying, wire का एक end connected है fixed support से, like this. And wire का दूसरा end है, वो wire के वो लोड से अटैच है, like this. ये लोड आ गया, ठीक है। तो वायर का एक एंड यहाँ पर अटैच्ड है और दूसरा एंड पर लोड अटैच्ड है, और वायर लोड हैंग्स वर्टिकली, और वायर हैंग्स वर्टिकली. Diameter d of the wire and force F, diameter d and force F की वैल्यूज गिवन है. तो diameter d है 0.4 plus minus 0.02 millimeter and force है 25 plus minus 0.5 Newton. ठीक है. For the measurements of the diameter of wire, state a suitable measure. State the name of the suitable measuring instrument. Diameter को measure करने के लिए suitable measuring instrument कौन सा है? Micrometers, Yes, Sajjad, Google. it's micrometer. Yes, Afifa, it's micrometer. And whoever opened the mic, आप भी बिल्कुल ठीक कह रहे हैं. ठीक है. So write the full name, micrometer to gauge. How random error may be reduced while using the instrument? One of the random error is parallax error. And how to avoid parallax error? By keeping your eye perpendicular to the readings. ठीक है बेटा. आगे बढ़ते हैं. इस क्वेश्चन में सर, इस क्वेश्चन के 2 मार्क्स हैं. पहला ये बताने की कि एरर क्या होगा, दूसरा ये कि आप इसको सही कैसे करोगे. पहला ये कि आपने पैरेलक्स एरर की क्लासिफिकेशन बहुत बड़ी है. ठीक है. आप उसको कर रहे हैं. Yes, Amal, you can also say that you can take multiple readings and take an average. ये भी include कर देता हूँ. And then take multiple readings and take an average. सही. Stress in the wire is calculated by using the expression. Show that the wire of stress is this. मतलब वायर में जो स्ट्रेस है उसकी वैल्यू ये आ रही है, प्रूफ करें. चलो देखते हैं. सिग्मा इक्वल्स टू 4f अपॉन पाई डी स्क्वायर. 4 ऐसे ही लिखा. व्हाट इज द वैल्यू ऑफ f? दिस इज द वैल्यू ऑफ f, 25 न्यूटन. What is the value of pi? 3.143. What is the value of diameter? 0.4 millimeter.
So 0.4 millimeters divided by 1000. We can also write this as 10 raised to the power 3, or we can also write this as this. Okay? So now, मैं इसको 0.4 into 10 raised to the power minus 3 square put square. So now देखते हैं क्या आंसर आएगा. 4 multiplied by 25 divided by 3.142 multiplied by 0.4 exponent minus 3 square. ओके, बहुत बड़ा जवाब आ रहा है. 190 1.989 1.989 into 10 raised to the power 8 न्यूटन मीटर माइनस 2. सब ऐसा यूनिट में लेके गए हैं तो आंसर भी ऐसा यूनिट में आएगा. तो इसको अगर मैं राउंड ऑफ करूं, व्हाट विल हैपन? 1.99 एक्सपोनेंट 8 न्यूटन m minus 2. So this is our answer which our examiner asked us to find. या आप ये लेकर आए और ये दिखाएं कैसे आंसर है. क्या बेटा? नाउ अब ये क्या पूछ रहे हैं? डिटरमाइन द परसेंटेज अनसर्टेनिटी इन स्ट्रेस. चले फाइंड आउट करते हैं. तो कैसे निकालेंगे बेटा? परसेंटेज अनसर्टेनिटी स्ट्रेस, absolute uncertainty in stress upon stress multiplied by 100 equals to 4 number है, no uncertainty. Uncertainty in force upon force multiplied by 100 plus uncertainty in diameter upon diameter multiplied by 100, and whatever the power is multiply that power. ये आपके पास वैल्यू बन गई. Now let's see what the values are. I'm just taking a screenshot so that I don't have to move again and again. Okay. So uncertainty in stress upon stress multiplied by 100 equals to plus minus. Uncertainty in force is 0.5. Force itself is 25 multiplied by 100 plus 2. Uncertainty in diameter is 0.02. Diameter itself is 0.4 multiplied by 100. तो चलें देखते हैं क्या आंसर आ रहा है. So 0.5 divided by 25 multiplied by 100 plus 0.2 multiplied by 0.02 divided by 0.4 multiplied by 100. Okay, the answer we are getting right now is 12. Okay, so 12%. Okay, yes, Aman, it's 12. Ooh. चलो यहां तक देख लें. लास्ट पार्ट क्या होगा? वो वही फाइनल इक्वेशन बनाने का बोलेंगे हमें. दैट हाउ राइट डाउन द फाइनल इक्वेशन. क्या? Sure. Beta, I am giving you the renaming right. Whoever that crypto miner is, kindly rename yourself. Thank you.
Okay, so now we know what is a percentage uncertainty in stress. Use the information in B1. What was B1? B1 was the value of stress, and B2, the percentage uncertainty of stress, to find absolute uncertainty with the appropriate number of significant figures, मतलब 2 significant figures. ठीक है, चलें. Uncertainty stress upon stress multiplied by 100 equals to 12 there. We want this in order to find out absolute uncertainty. ठीक है, तो uncertainty in stress 12 multiplied by stress upon 100. 12 multiplied by stress क्या है, 1.99 exponent 8 divided by 100. What do we get as an answer? 12 multiplied by 1.99 exponent 8 divided by 100. 2 point, yeah, 0.2388. ठीक है, ये आंसर आ रहा है. अब जो आपको फाइनल वैल्यू लिखनी है, I told you whenever you are writing down the final value, keep, yes Mishal, keep 2 things in mind. One, बल्कि keep 3 things in mind. One, your final value have the same value of significant figures for the actual value and uncertainty. 2, the powers are same. Exponent 6 है और इसका exponent 8 है, तो we'll have to adjust. The third one, the units of both are same. So let me adjust. यहाँ पे मैं adjusting काम कर रहा हूँ. ठीक है, तो 1.99 into 10 raised to the power 8 को मैंने appropriate number of significant figures में क्या कर दिया, 2.0 exponent 8. 2 significant figure होगा. And 23.88 exponent 6 को हमने कर दिया 0.2388 exponent 6, exponent 8, sorry, which later on became 0.24 into 10 raised to the power 8. So see, 1, 2, 1, 2, 2 significant figures, same power, and they have same units. Okay, now we can write them in the final equation. 2.0 exponent 8, 0.24 exponent 8. ठीक है बेटा, तो एडजस्टमेंट बहुत जरूरी है when you are writing down the final equation. Understood? Clear, sir. Okay, let's move ahead. So we completed one more question related to the topic known as uncertainty. And सर हम लोग अनसर्टेनिटी कब खत्म करेंगे? आज की क्लास लास्ट क्लास है. We have seen that how much past papers we can do. Then inshallah in Thursday's class we'll start the last section of this chapter known as scalars and vectors. All right, sir. Why?
Okay. Next question we have is October, November 2016 P21. ठीक है? Define density. How do you define density? Mass over volume. Yes, mass over volume. The ratio of mass over volume. volume. Yes, thank you. Good. The mass m of the metal sphere is given by the expression. ये expression हमें दी हुई है. Rho is the density, d is the diameter. The data is given. Okay. We have given with percentage uncertainties. So we'll be making an equation according to percentage uncertainty. Calculate diameter d. Okay. So first of all, अभी uncertainty की कोई बात नहीं हो रही है. He just said calculate diameter d. So we have to make sure that we make diameter as subject like this. Diameter cube equals to 6m upon pi rho. Okay. And just to get rid of that cube root, what do we have to do? Just to get rid of that cube, we have to place cube root. क्यूब रूट में क्या होगा? इस क्यूब से क्यूब कैंसिल आउट हो जाएगा. And now d will be equals to cube root of x. The value of mass is 7.5 kg divided by pi 3.142 and the value of density is 8100. Okay. Now let me show you how to put the values in calculator. First of all, shift under root. This will give you the cube root. Okay. Numerator denominator 6 multiplied by 7.5 3.142 multiplied by 8100. क्या आ रहा है हमारे पास? 0.1209. And what are the units? हमने दोनों यूनिट SI यूनिट्स में लेके गए हैं, तो diameter will also be in SI unit. And then two significant figures we can write 0.12. Okay. Perfect. आगे बढ़ते हैं. Use your answer and the data in figure 1.1 to determine the value of D with its absolute uncertainty to appropriate number of significant figures to significant figures. So बेटा मैंने आपको क्या बताया कि we will use the concept of percentage uncertainty because the percentage uncertainties are given. तो देखें क्या होगा. Use the simplified formula and कैसे यूज करेंगे simplified formula. Now this is the tricky part. जरा गौर से सुनिएगा. What was the formula for diameter? Cube root of 6m upon pi rho. Can I write cube root like this? कोई मसला? कोई इशू? अगर मैं cube root को ऐसे लिखूं कोई मसला नहीं है. All okay? Yes, sir. Okay. So now the formula becomes 6 की power 1 over 3 mass की power 1 over 3 upon pi की power 1 over 3 and density की power 1 over 3. ठीक है. But now we are going to find out uncertainty and we know that these two are constant. They don't have any uncertainty. तो हम देखें क्या करेंगे. Uncertainty in diameter upon diameter. I told you हमें पूरी इक्वेशन परसेंटेज अनसर्टेनिटी में डील करनी है. ठीक है. परसेंटेज अनसर्टेनिटीज आर गिवन प्लस माइनस
uncertainty in mass over mass multiply by 100 and whatever power is with आप उसे मल्टीप्लाई करते हैं तो 1/3 पावर है हमने मल्टीप्लाई कर दिया प्लस अनसर्टेनिटीज हमेशा ऐड होती हैं uncertainty डेंसिटी अपॉन डेंसिटी मल्टीप्लाई बाय 100 whatever power is आप उससे मल्टीप्लाई करते हैं now what we are up to we need to find out this only uncertainty or absolute uncertainty in diameter so let me write that equation once again just to make sure I have yes. I have now a simplified version of the equation. ठीक है अब जरा वैल्यूज को पुट करते हैं लेट मी कॉपी डाउन the whole table okay what is this percentage uncertainty in mass and we have the percentage uncertainty in mass as 4% ठीक है so uncertainty in diameter equals to plus minus 1/3 multiply by पूरे की जगह 4% आ गया सॉरी plus 1/3 this whole thing is replaced by 5% ठीक है बाहर diameter है which is what we found as 0.12 divided by 100 let's Sir? solve yes beta Sir, we replace it. It's because they've already given us the percentage. yes this value is considering density upon density multiplied by 100 and this value is uncertainty in mass over mass multiplied by 100 ठीक है Okay, sir. so now bracket 4 divided by 3 sorry plus 5/3 multiply by 0.12 divided by 100 so we get 0.0036 and the units are all SI units now बेटा हमने अनसर्टेनिटी और एब्सोल्यूट अनसर्टेनिटी तो फाइंड आउट कर ली बट अब हमें क्या करना है बेटा हमें अब यहाँ पे कंडीशनिंग करनी है जो मैं आपको पहले कंडीशनिंग समझा रहा था वो कंडीशनिंग करनी है ठीक है चलो हाउ कैन वी डू द कंडीशनिंग देखो 0.12 actual diameter ठीक है should we use accurate value of D just two significant figures ठीक है अच्छा यहाँ पे मल्टीप्लिकेशन में हाँ थैंक्स तो जरा हम चेक कर लें 0.9 ठीक है कुछ इतना खास फर्क नहीं आया 3627 हो गया ठीक है तो यस अच्छा अब देखें 0.12 एक वैल्यू है which is diameter
and uncertainty in diameter is 0.003627. So let's do one thing. Let's create it with the power of 3. Or you can say minus 3. So 3.6 into 10 raised to the power minus 3. So we have two significant figures as 3.6. Like अगर मैं कैलकुलेटर में भी आपको लिख के दिखाऊं 0.003627, ठीक है, और ये देखो 3.6 एक्सपोनेंट माइनस 3 हो गया। अब यही चीज अगर मैं 0.12 पे जाऊं 0.12 120 एक्सपोनेंट माइनस 3, परफेक्ट। दो सिग्निफिकेंट फिगर्स किस तरह, नॉन जीरो 2SF, नॉन जीरो ट्रेलिंग जीरो विदाउट डेसिमल 2SF, पावर सेम, दोनों की यूनिट भी सेम। हो गई कंडीशनिंग, हो गया ना फैसला, ठीक है भाई। तो आओ हमने यहाँ पे इसको लिखना है 120 एक्सपोनेंट माइनस 3 and 3.6 exponent minus 3. ठीक है बेटा, this is how you can write down your final answer. Okay. Questions Sir, you have? why did we Yes. change the 0.12? Wasn't it Uh, already in significant figures? It was already in significant figure, but we need to match the significant figures of what do we say, our uncertainty as well. If you're writing down it like this, you need to write it down like 0.0036. This will also be correct. Okay? But Okay, sir. it's better to write down the answer with significant standard form, because it makes us a bit less error catchy. हम error यहाँ पे थोड़ा कम करेंगे. All right, sir. So this is how we have done one more question related to uncertainty. Understood? Yes, sir. Okay. What about the others? कहाँ गायब हैं हमारे मेहनत कश जवानों की आवाज क्यों नहीं आ रही? आयान, मदी, मौजूद है हम सर, डेफिनेटली। हाँ? कहाँ जा सकते हैं, हाँ, मौजूद नहीं है। करे ना, परफेक्ट। अभी तक एनर्जी बहुत है सर, मैंने बोला कि नहीं, आज मेरे पास बहुत एनर्जी है। आपके यार लेसन के लिए स्पेशली रखी थी मैंने। ये देखो, यू गाइज आर द सोर्स ऑफ माई एनर्जी, ये बात मैं तुम लोगों को बार बार कहता हूँ। आज मैं अब तुम्हें अपनी जिंदगी से हम रोशनास करवाता हूँ। ये देखो भाई, ये आज मेरी जिंदगी थी, एंड यू आर द लास्ट क्लास ऑफ माइन। Oh my God, sir. आपके बाद भी ओ लेवल्स के दो बच्चों ने एडिशनल समझने के लिए, विच इज नॉट द पार्ट ऑफ द सिलेबस, टाइम लिया हुआ है। I will revise everything. Yes. आयान खुश है, बिल्कुल खुश है। सर डेफिनेटली खुश हूँ सर, ये क्या बात है। नहीं, ये मदी बोल रहा है, आयान खुश लग रहा है। थैंक यू सो मच अफीफा, मीन्स अ लॉट। चले, अच्छा जी, लेट्स डू one or two more questions. Okay, we have one question from May-June 2016 P21. Okay, make estimate of the mass of in kg of wooden meter roll.
So I'll be needing the lectures of ours. वुडन मीटर रूल का मास पूछ रहे हैं, एस्टिमेटेड मास। तो मास प्लास्टिक रूलर का है जो कि 30 सेंटीमीटर का। तो वुडन मीटर रूल में ऐसे कितने सेंटीमीटर्स रूलर फिक्स हो सकते हैं? अबाउट 3। तो अगर इसका मास अप टू 100 ग्राम्स है तो उसका मास क्या होगा? मल्टीप्लाई बाय 3 यानी 300 ग्राम, अबाउट 300 ग्राम। ठीक है, तो you can write down estimated mass as 300, सॉरी केजी में मांगा है 0.3। सही है। Similarly, volume in centimeter cube of a cricket ball or tennis ball. Let's see. Do we have written down volume? Volume of, we don't. सर ये सारी चीजें हमें याद करनी होंगी या तो फिर ये बस आपने ऐसी दी हुई है? याद करनी होंगी। एंड मैंने एक तरीकेकार बताया था मधी, इफ दे आर लेट्स से 80 एंड आपके पास पूरे 8 मंथ्स हैं, 8 मंथ्स में 32 वीक्स हैं, तो डिवाइड बाय 32 कर लो। ऑलमोस्ट 2 रीजनेबल एस्टिमेट्स आपने पर वीक याद करने। दिस इज हाउ यू हैव अ गेम प्लान। ठीक है, तो वॉल्यूम, आई एम, let me see what should be the volume. Okay, 50 to 300 centimeter cube. तो 50 to 300 इन बिटवीन कोई भी वैल्यू आप लिख सकते हैं, 50 to 300 सेंटीमीटर क्यूब। ठीक है, एंड क्या होगा यहाँ पे, कोई भी एक वैल्यू लिख दें। लेट्स से मैं 200 वैल्यू लिख रहा हूँ। ठीक है, mass in kg of a wooden meter rule. प्लास्टिक इज हैवी और वुड थोड़ा सा कम कर देते हैं, काम करते हैं 0.25 या फिर 0.2 कर लें। रीजनेबल एस्टिमेट है, रेंज के अंदर रहते हैं। ठीक है, चलो। तो metal wire of length L has a cross sectional area of diameter D. तो क्रॉस सेक्शनल एरिया की शेप क्या दिख रही है बेटा हमें? सर्कल। ठीक है, the volume V of the wire is given by the expression this. The diameter, length and mass are measured to determine the density of the metal wire. The measured values are, ये सारी measured value लिखी हुई हैं। I'll be needing those values, so I am taking screenshot to the calculation. Calculate density. Afifa, where your school is? In Middle East? Okay. You know what? There's a problem there. I also teach one of the students from UAE, अहमद नाम है उसका, एंड वहाँ उसके कॉलेज में भी उठापटक चल रही होती है टॉपिक्स की। कभी काइनेमेटिक्स पढ़ा दिया, कभी फोर्स डेंसिटी प्रेशर में चले गए। एंड आई बिलीव एएस को, ए लेवल्स को बहुत ज्यादा तरीके से डील करना पड़ता है, तभी वो चीजें हाथ में आती हैं। मैंने बोला सर हमारा 4 भी कुछ महीने का ऐसा ही सिलेबस है सेम बस। चल रहा जी बेटा, है। हमारा भी कुछ ऐसा ही सेम सीन चल रहा है। हाँ 4 महीने का सिलेबस है, बाकी सिर्फ प्रैक्टिस है पास पेपर्स की।
हाँ, I heard about it. So Allah hidayat de. Let's not backbite. Okay. सर बड़े मजे की बात बताओ, Yeah. हम लोग यहाँ पर यूनिट 1 शुरू किया है स्कूल में। एक टीचर यूनिट 1 पढ़ा रहे हैं, दूसरी टीचर यूनिट 9 पढ़ा रहे हैं, यूनिट यूनिट Unit 8 पढ़ा 9 रहे is हैं इलेक्ट्रिसिटी। electricity. हाँ, इलेक्ट्रिसिटी पढ़ा रहे हैं, एक टीचर इलेक्ट्रिसिटी पढ़ा रहे हैं, दूसरी टीचर यूनिट 1 पढ़ा रहे हैं। अरे भाई क्या चल रहा है? Thank you अमल, means a lot. Okay. सर ये बात बिल्कुल सही है। द ओनली रीजन कि मैं अभी फिजिक्स कंप्लीटली चिल ले रहा हूँ वो सिर्फ आपकी वजह से। मुझे पता है आप कवर करवा देंगे। I second स्कूल that. पर भरोसा ही नहीं रहा, स्कूल पर भरोसा ही नहीं रहा, तुमने सब तो सारा लाइव भरोसा क्लास आप पर में है। रुला दिया मुझे यार। ओके, ये जब भी तो बोलता हूँ यार, दिस द रीजन आई हैव लास्ट क्लास of yours because you are the source of my energy. Not, I mean, I'm not talking about the things you are saying and blushing or buttering, but आप एक बात नोट करें, whenever I'm taking your class, मैं माइक्रोफोन्स ऑन कर देता हूँ। ये किसी दूसरी क्लास में नहीं होता, ये आपकी ओ लेवल्स की क्लास में भी होता था। तो द रीजन इज आई ट्रस्ट यू गाइस and I get energy vibes from you guys. तो ये है, चले आगे बढ़ते हैं। The density of the metal with its absolute uncertainty. Okay, calculate density with absolute uncertainty. Give your answer to appropriate number of significant figures. We know what to do. अगर बताते नहीं तो भी हम लोग appropriate number पे ही लीड करते हैं। चलो, the diameter, length and mass m are measured to determine the density of the wire. Okay, सर पहले यहाँ पे इसको डील करते हैं। We have the equation for volume and we have mass, so we need to deal with density, which is mass over volume. पहले तो फॉर्मूला बनाना होगा। The mass is capital M and volume is pi d square L upon 4. को कंडीशन करेंगे, सिंप्लीफाई करेंगे तो 4m upon pi d square L। ठीक है, नाउ मल्टीप्लाई डिवाइड इक्वेशन है, it's the work of fractional uncertainty. Uncertainty in mass upon mass plus uncertainty in diameter upon diameter plus uncertainty in length upon length. Since diameter square का factor है तो power multiplied by 2. 4 and pi are constant, they have nothing to be dealt with uncertainty. ठीक है, तो आई ऑलरेडी, चले ये वैसे हमारे सामने भी है, चल वैल्यूज पुट करते हैं। व्हाट डू वी वांट टू नो? वी वांट टू फाइंड आउट दिस। लेट मी राइट दिस इक्वेशन वंस अगेन। एंड अब दिस इक्वेशन इज सिंप्लीफाइड। अब इसको सॉल्व करना शुरू करते हैं। ठीक है, तो uncertainty in density will be equals to plus minus uncertainty in mass 0.001, actual mass 0.225 plus 2 multiplied by uncertainty in diameter 0.01 or actual diameter 0.38. I told you during the fractional uncertainty concept we don't have to convert, because जो convert ऊपर करोगे वो नीचे करोगे, it will cancel out. Now uncertainty in length upon length, we found out the density to be
वी फाउंड आउट द डेंसिटी भी, क्या वैल्यू आई थी हमारे पास डेंसिटी की? अच्छा, डेंसिटी की वैल्यू निकाली ही नहीं अभी हमने। ओके, फिर तो पहले डेंसिटी की वैल्यू निकालनी होगी। थोड़ी देर रुक जाए, इसको जरा यहाँ पे कॉपी पेस्ट करते हैं। आई नो यू कांट डू दिस, कहीं साइड में डेंसिटी की वैल्यू निकाल लें। तो 4 मल्टीप्लाई बाय मास इज 0.225 divided by 3.142, डायमीटर इज, यहाँ पे कन्वर्ट करने की जरूरत है। तो ये ग्राम में है तो किलोग्राम में कन्वर्ट किया, 0.225 ग्राम है तो डिवाइड बाय 1000, या ये लगा दें कि किलोग्राम में कन्वर्ट हो जाए। डायमीटर इज 0.38, मिलीमीटर के मीटर में जाना है, एक्सपोनेंट -3, स्क्वायर है स्क्वायर लगा दिया, मल्टीप्लाइड बाय लेंथ 25, इन सेंटीमीटर है, मीटर में लेके जाएंगे लाइक दिस। ठीक है, तो जल्दी से इसे कैलकुलेट करते हैं। 4 मल्टीप्लाई बाय 0.225 एक्सपोनेंट -3 डिवाइडेड बाय 3.142 मल्टीप्लाई बाय 0.38 एक्सपोनेंट -3 का स्क्वायर मल्टीप्लाई बाय 25 एक्सपोनेंट -2, 79 34.67, and all the SI units are there to kgm -3। ये हमने डेंसिटी निकाल ली। ठीक है, अब बस डेंसिटी की वैल्यू को यहाँ पे पुट करते हैं, अनसर्टेनिटी भी निकालते हैं, 7934.67। व्हाट आर वी टॉकिंग अबाउट? मेटल है ना? हाँ सही है, मेटल की डेंसिटी तकरीबन इतनी में होती है। अच्छा जी, तो चलें इसकी कैलकुलेशन करते हैं। 0.001 डिवाइड बाय 0.225, 2 मल्टीप्लाई बाय 0.01 डिवाइड बाय 0.38, 0.1 डिवाइड बाय 25 मल्टीप्लाई बाय 7934.67, 484। -3। चलो जल्दी से इसे रिकंडीशन करते हैं। डेंसिटी 7934.67 है, तो 2 SF में 7900 कर दो। ठीक है, एंड 484 अनसर्टेनिटी इन डेंसिटी 484.61 है, 2 SF में 480 कर दो। फाइनली 7900 480। सही है। ब्लैक बॉक्स वाली वर्किंग दिखाना जरूरी है? जी, ब्लैक बॉक्स वाली वर्किंग दिखाना जरूरी है, और कैन ये वी आप राइट इट अपने लिए डायरेक्ट? कर रहे हो, दिखाना जरूरी नहीं है। ऑलराइट। ठीक है, तो अगर आप कहीं अपने माइंड में भी कर लेते हैं तो इट्स ओके। मुझे आपको ये रिकंडीशनिंग का ब्लॉक दिखाना इसलिए जरूरी है बिकॉज इट्स इम्पोर्टेंट। यू कैन नॉट राइट डाउन द आंसर एज दे आर रिटन डाउन। 3 चीजों का ख्याल रखने का बोला है, सेम सिग्निफिकेंट फिगर्स, सेम यूनिट्स एंड सेम स्टैंडर्ड फॉर्म्स, पावर। ठीक है, जब भी आप एक्चुअल वैल्यू विद अनसर्टेनिटी लिख रहे हैं। ओके बेटा, राइट सर। so let me know if you guys have any question regarding
टॉपिक अनसर्टेनिटी बिकॉज आई बिलीव आज की क्लास में हमने सिर्फ अनसर्टेनिटी जितना आज हो सकता है वो हम लोगों ने डील करना है, क्योंकि हमने किया। एंड व्हाट आई वांट, हम थर्सडे की क्लास में स्केलर्स एंड वेक्टर्स शुरू कर रहे हैं। आर यू ओके विद दिस? डू यू सी मी आई Yes, टू sir. आई? Yes, sir. Perfect. Perfect. So, just a precaution. I'll be sharing some of the past papers with you before our next class. तो उनका प्रिंट आउट निकलवा के रख लीजिएगा, ठीक है? क्योंकि स्केलर्स एंड वेक्टर्स में हमें एग्जैक्ट मेजरमेंट्स चाहिए होती हैं। मैं भी अपना ये जो कैमरा यहाँ पे लगा हुआ है ना, जो टेबल कैमरा है, वो ओपन करके आपको वर्क मेजरमेंट दिखाऊंगा पूरी प्रॉपर, कि किस तरीके से हम लोगों ने स्केलर्स एंड वेक्टर्स को डील करना है। हैव कंप्लीट ज्योमेट्री बॉक्स विद यू इंक्लूडिंग प्रोटेक्टर एंड शार्प पेंसिल, इरेजर, 30 सेंटीमीटर रूलर, ठीक है? ये चीजें लेके बैठनी है क्लास में, ठीक है बेटा? Okay, sir. All right, sir. सही है। So this is where we end our class and we completed our topic, one of the commonly asked topic known as uncertainties, and we have through the base units as well. So I would say not 2/3 but 2.5 third of the chapter has been completed with thorough solution of past papers. So yeah, I'm happy. चलो, तो इंशाल्लाह ख्याल रखिएगा, दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज। Allah Hafiz, sir. अल्लाह हाफिज सर। अल्लाह हाफिज। अल्लाह हाफिज सर। अल्लाह हाफिज। Sir. अल्लाह हाफिज।